Hello everyone, welcome back to this course on quantitative methods at Econiti. In the last lecture, we basically started with the revision process and we did a quick run through a lot of concepts. In this lecture again, we will continue that. So let's just see what we are going to do. I will just show you that whatever we have covered, just 1 second. Yeah, so I'll just show you that whatever we have covered in the last section, in the last lecture was this, right? So remember, this is your introductory statistics in your first semester. And we have already covered the introduction overview and the elementary probability theory in the first revision lecture of Get Your Stats Straight. Now, in this lecture, we are going to finish off whatever we covered in the first semester of statistics, right? So we are going to go through random variables and what they are, what's the meaning, what's the intuition, and what does it mean for them to have a probability distribution, है ना? उसके बाद हम फिर special probability distributions पे जाएंगे. Now, we will, instead of going through a lot of detail about कि किसका distribution कैसा है और उसके ऊपर numericals and all that, something that you can always get in some book. What we will do is, instead, what I'll try to explain to you is what each of these distributions are in the form of a story. Okay, so we will try to make it interesting, something that sticks, rather than बस mindless तरीके से math किए जा रहे हैं. कोशिश करेंगे कि समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करते हैं, ठीक, क्या मतलब है इनका, क्यों ये ऐसे हैं. And finally, we will also do a couple of joint distributions and what random sampling we've already done. तो उसका कैसे यूज होता है जब हम दो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंटली देखते हैं तब, ठीक. So let's get started. Again, it will be a session of like an hour and a few minutes. And again, the purpose is not to teach. The purpose is to jog your memory. Maybe I will try and explain some things that you have not seen like that before in a more intuitive way. That is always my aim. Okay, so let's get started. All right. So this is where we need to start, right? First two chapters हमने कर लिए हैं. अब हम आते हैं random variables पे. Usually you will see that when we start with random variables, we start with the discrete random variables, है ना? क्योंकि उनका handling easier है, उनका intuition समझना आसान है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर ग्राफ और फिगर बनाना आसान होता है. That's why. Otherwise conceptually a lot of things are same. अगर उस चीज को ही continuous में ले जाओ तो वो continuous random variables बन जाते हैं. But there are some important differences and distinctions which we will discuss as we go along the way. All right. So why do we want to look at random variables? First, let's see what's the definition of random variables. So what you will see over here is that, yeah. So here you will see that if you have a sample space, something that we've already covered, sample space hai, matlab you have all the possible outcomes that can be possible in an experiment, right? Tab a random variable is any rule, right? Any rule matlab function, but zaruri nahi hai ki wo function ke sare quality satisfy kare. Okay? So a random variable is any rule that associates a number with each outcome in S. ठीक है? So yeah, so it is a function, right? So in mathematical language, a random variable is a function whose domain is the sample space and whose range is the set of real numbers. Okay, so what we are trying to say over here, just a second. So हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है जहां से कोई भी फंक्शन अपने वैल्यूज उठाता है, जो x वैल्यूज है, और रेंज क्या होता है? जो y वैल्यूज है, right? So what it is doing is, suppose you have a sample space, again वो वाला हमारा जो है HH, HT, TH and TT, right? So what this random variable will do, any random variable, is कि हर किसी को एक नंबर दे देगा
Usually this assignment will be based on some rule that you want to follow, right? But the thing is that you can have so many rules. For example, इसके ऊपर एक रैंडम वेरिएबल जो डिफाइन हो सकता है वो ये हो सकता है कि तुम हर किसी को एक अलग नंबर दे दो, है ना? तुम बोलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, right? This is a random variable. You choose another variable where you give a number 1 whenever, or you just count the number of heads, है ना? अगर ऐसा कोई you want to check out के ऐसा इस इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तुम्हारा जो है पर्टिकुलर इवेंट जो आएगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दैट मीन्स दैट this particular one will get a number 2, both of these will get 1 each, and this will get 0. अब अगर मान लो तुमको कुछ और टेस्ट करना है, तुमको देखना है कि भाई पहले वाले टॉस में हेड्स आया या नहीं आया, तो कोई और रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लो. ठीक है, इसमें आया है, इसको यस दे दो, 1 दे दो. इसमें आया है, इसको भी 1 दे दो. इसमें नहीं आया है, इसको 0 दे दो. एंड सिमिलरली विद दिस, define yet another. Suppose you want to count the number of tails. Suppose you want to see that whether or not the second one was a heads, right? Suppose you want to see that I don't know whether both the coin heads had the same face, दोनों heads या दोनों tails. So suppose इसको फिर 1 दे दोगे, लेकिन इसको और इसको you will give 1, and these two will get a 0. एंड 1 और 0 जरूरी भी नहीं है, तुम 1 और 2 भी दे सकते हो, तुम 5 और 100 भी दे सकते हो, तुम 1000 और 10,000 भी दे सकते हो, whatever you please. Okay, so then बस मतलब you have to be consistent whatever rule you are following. All right, so what is happening here? यहाँ पे ये हो रहा है कि जब हम अभी तक प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहे थे ना, तो हमने क्या कहा था, जैसे कोई भी सैंपल स्पेस है उसके ऊपर हमको कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू लिस्ट ऑल दोज आउटकम्स, है ना? इसमें हमने क्या किया, हमने सारे आउटकम्स लिस्ट किए, जो पूरा सैंपल स्पेस है उसको लिस्ट किया, एकदम ही वर्ड बाय वर्ड लिखा कि अच्छा ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये पॉसिबल. मान लो कि यू हैड 3 coin tosses or you were tossing the same coin 3 times, same thing, right? Then how many will you have, right? You will have 9 possibilities. अब random variables तुम क्या कर सकते हो, you can work with the same experiment and you can define various events using a different random variable. So suppose जो blue वाला है, let's call this random variable x. Usually we denote random variables are customarily denoted with uppercase such as x or y. ठीक, so you want to define a random variable that assigns a unique, मतलब जहां पे ऑर्डर और कंपोनेंट दोनों इंपॉर्टेंट हो, सो हर किसी को अलग नंबर मिलेगा. दिस इज वन रैंडम वेरिएबल. सपोज you want to define another random variable which counts the number of heads, so that is your green one. So this random variable y counts the number of heads, right? This random variable with purple, it counts what, whether or not it was heads in the first trial. So let's say this is some z. This random variable in yellow counts whether or not what you had the same face on both the coins, right? So this is some, I don't know, u. What you could do is you could use a simple you could just use one experiment का sample space, and you could create different random variables out of it. अब ये randomness कहाँ से आती है, जैसे हमने पहले भी कहा, when we talk about that what is uncertain in an experiment, it is definitely not uncertain कि कौन कौन सी possibility है. What is uncertain is कौन सी possibility actually materialize करेगी. Similarly, the randomness of a random variable, look over here, random variable, right? A variable, because, so we are calling it a variable, that means that it will vary every time. उसका randomness कहाँ से आएगा? Because different numerical values are possible, and random because the observed value depends on which of the possible experimental outcomes results. So हम इसको पहली बात तो randomness कहाँ से आ रहा है? Is suppose if you are working with a random variable like y, randomness is कि क्या जब तुम 2 coin toss कर दोगे, मतलब when you have performed the experiment,
रैंडमनेस इज 1 और 2 में से कौन सा नंबर ये रैंडम वेरिएबल लेगा. Which number will this particular y random variable take? It can take 1 or 2, but which particular, that's random. That's probabilistic, right? But random. Similarly, if you have z over here, z के possible values हैं 1 and 0, again random. ठीक. X के possible values हैं 1 2 3 4, again random. So that is the randomness part. And what is the variable part? वेरिएबल पार्ट ये है कि तुमने इस सेम सैंपल स्पेस पे 4 and possibly more, sorry, right, you on the same sample space you could define 4 and possibly more random variables. Okay, just 1 second. All right, so this is your idea of a random variable. Okay, now as I told you कि meaning क्या है, reason क्या है और intuition क्या है, right? So then it becomes very easy to work with probability, to work with random events, to work with experiments when you've sort of converted the problem into the space of random variables. ठीक है ना, तो तुम आराम से नंबर्स के साथ डील करोगे, सारा तुम्हारा मैथ इजीली अप्लाई हो जाएगा. यू डोंट हैव टू वर्क विद 1 2 3 4 5 6 आया क्या डाइस पे, या फिर HHT THT ऐसा कुछ आया क्या. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट? ओके. Now what we will do is, so usually the notation will be like this, as I told you, x or y capital hoga, but there's no as such rule. You can just use any alphabets. Okay. Then what we will do is develop some intuition based on a very basic random variable, discrete random variable, which is a Bernoulli random variable. ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट जनरली एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं. सो रैंडम वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड ए बर्नौली रैंडम वेरिएबल इफ एसेंशियली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हुआ उसके आउटकम्स को, बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली जिसके दो ही वैल्यूज पॉसिबल, राइट? एंड वी यूजुअली गिव दोज वैल्यूज एज 0 and 1, है ना? तो इसको हम कैसे सोचते हैं? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? द स्टोरी इज, suppose you do an experiment and the experiment can only result in a success or a failure. बर्नौली का स्टोरी ये है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम सिर्फ सक्सेस या फेलियर में तुम उसको कैटेगराइज कर सकते हो, राइट? देन this sort of an experiment is called a Bernoulli trial. Right? And ऐसे बर्नौली ट्रायल में जो वो रैंडम वेरिएबल असाइन होगा उस तरीके से, दैट इज कॉल्ड अ रैंडम बर्नौली रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो इस वाले केस में देखो, फॉर एग्जांपल योर एक्स नॉट अ बर्नौली ट्रायल. क्यों? क्योंकि एक्स में हमने हर किसी को एक इंडिविजुअलिटी दे दी, है ना? बट लुक एट योर जेड. जेड सेड दैट experiment same hai, remember this, it's the same experiment, but what you have done is you have defined a variable such that it divides the experiment ka sample space into a success and a failure category. तो अब जो वो पूरा सैंपल स्पेस है ना, ये लुक एट दिस, ये वाला जो जी वाला सैंपल स्पेस है इस फिगर में, इस पूरे सैंपल स्पेस को तुमने somehow based on some rule you have divided it into a success and a failure, right? इस केस में जो z है over here, this z is a random variable, is a rule where you said कि अब भाई हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो है फर्स्ट टॉस में हेड्स आया या नहीं. तो ये आया या नहीं, इसका दो ही जवाब हो सकता है, या तो आया या तो नहीं आया, क्योंकि हेड्स के अलावा टेल्स ही ऑप्शन है, और या तो हेड्स आएगा या तो नहीं आएगा, राइट? सो व्हाट यू हैव डन इज यू क्रिएटेड अ रूल दैट यू गिव इट एनी आउटकम फ्रॉम योर सैंपल स्पेस
वो बता देगा कि उसको सक्सेस में डालना है कि फेलियर में डालना है। ये किया इसने, जब भी फर्स्ट में एच आया इसने उसको सक्सेस में डाल दिया, इट गेव इट अ नंबर 1, and whenever there was no h, it gave it a number 0. This is, if your random variable behaves like this, then it is called a Bernoulli random variable. यही उसकी स्टोरी है, और जो वो एक्सपेरिमेंट होता है उसको बर्नौली ट्रायल बोलते हैं। इसी में तुम दूसरा बर्नौली रैंडम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज डू दैट, राइट? दिस इज also a Bernoulli random variable, the yellow one, u was counting was what? Whether both first and second tosses had the same face. फिर से whether or not, या तो होगा या तो नहीं होगा, मे भी तो नहीं होगा, है ना, या तो होगा। जैसे ही हुआ वो तुमने कैटेगराइज कर दिया एज सक्सेस, जैसे ही नहीं हुआ तुमने कैटेगराइज कर लिया एज फेलियर। दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, सक्सेस एंड फेलियर, एंड व्हाट वी डू इज वी असाइन सक्सेस 1 एंड वी असाइन फेलियर 0। फिर से ये जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा ऐसे ही डिफाइन करो। सपोज यू कुड डिफाइन अ इनवर्स और नेगेटिव ऑफ दिस excuse me, you can define a negative of this random variable. सपोज तुम कहो कि दोनों जो आए हैं हमारे पास कॉइन टॉस में do not have the same face, so then the success is when they don't match, और तब ये इसका u वाले का उल्टा हो जाएगा। जहां पे इसको 0 दिया था, this other random variable will assign it a 1. It is all about how you define your random variable to be. Okay, so it's your random variable. It gives you that power. Okay, so now we have cleared up कि random variable क्या है, और Bernoulli is the easiest example that we can work with. Now let's discuss. There are two kinds of random variables, a discrete and a continuous. ठीक है, तो इसका बस definition देख लेते हैं. It's pretty intuitive. But जो discreteness or continuity है, that is based on the possible values that the random variable can take. Alright, so a discrete random variable is an RV. random variable को short में हम हमेशा RV लिखते हैं, क्योंकि कितना random variable लिखोगे. So it is a random variable whose possible values are either constitute a finite set, right? मतलब जैसे integers में categorize कर दिया, या finite set है which you can clearly point out that this particular outcome is different than this particular outcome, different than this particular outcome, right? So it is discrete like that. Or else can be listed as an infinite sequence, right? In which there is a first element, a second element, and so on. So basically, the thing that we are going for is what is called countably infinite. जो भी चीज को count कर सको, as opposed to if you have a continuous random variable, then you need two conditions to be satisfied. Of course, the first is that its set of possible values consists either all the numbers in a single interval on the number line. जैसा हम क्या कहते हैं कि अगर 1 or 2, if you write it like this, if your range, that the values that your random variable can take looks like this, that means you have two values that you can take, है ना, 1 या 2. If your random variable, let's say that let's write it like this, that your random variable can take a value between 1 and 2, which means ya to 1 ya to 2. And when you write it like that, the random variable can take a value like this, or the random variable can take a value like this. This means 1 or 2 is, these are just including the boundary and excluding the boundary. This means कि 1 और 2 में से जितनी possibilities हैं, the random variable can take any value. And that essentially means that it can take infinite number of values. Remember, you take any interval, any छोटू से छोटू interval on the number line, the numbers you can fit into it are infinite. Yeah, कितना ही तुम 1, 1.01, 1.001, 1.0001, and you can fit infinite numbers between 1 and 2, and in fact between 1 and 1.01 also. ठीक, so then
दिस इज वेयर दिस कंटिन्यूटी कम्स कि तुम उसके बीच में चाहे कितना भी डिस्टेंस छोटा कर लो, यू कैन ऑलवेज फिट अ नंबर इन बिटवीन, राइट? ओके, ये हमारी जो रियल नंबर लाइन है उसका फीचर। ओके, सो इट्स द सेट ऑफ पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉसिबल वैल्यू व्हाट इट कैन टेक either consists of all the numbers in a single interval on the number line, right? So possibly infinite in extent, right? Or all the numbers in a disjoint union. So you can just think के मतलब जरूरी नहीं है कि यूनियन कंटिन्यूअस हो, मान लो 0 से 10 तक ले सकता है, फिर 20 से 30 तक ले सकता है, but the idea is that the interval looks something like this and not something like this, not discrete values, anything possible within a range, ठीक है ना? And this is something that I will come to when we get to the discussion of continuous random variables. Is no possible value of the variable has a positive probability, which means that the probability that x is equal to c is actually 0 for all values. Okay, so this is, look at here, the second condition describing a continuous random variable is perhaps counterintuitive, perhaps क्या it is counterintuitive, but उसका reason है जो कि we shall see in chapter 4, right? Okay, so this is the basic distinction. पहले हम discrete से ही deal करेंगे so that we can ease out into the continuous. We don't have to worry. Alright, so discrete का मतलब क्या है? जो अभी हमने examples देखे तो मतलब you can take specific values. Right? You can take values like 1, 2, 3, 4, or you can take values like 1, 1.5, 1.75, 2, anything. This is possible. Just that कि उसको मतलब बिल्कुल ही first, second और third तुम उसको specify कर सकते. Okay. Now, let us get to probability distributions. In my experience, I have understood that students never understood what a probability distribution is. And I don't want this to continue. ठीक, पहले समझते हैं कि probability distribution का मतलब क्या है. जो भी इसका मे बी तुमने रट लिया हो कि इसका क्या मतलब है, या फिर you have I don't know, never understood. Let us understand a very clear thing. Okay, probability distribution का क्या मतलब? You have a random variable, right, which can take certain values. Suppose the random variable can take values 1, 2, and 3, right? Probability distribution is how the probability is distributed among these three groups. देखो, कोई भी random variable is of course based on an experiment. जो भी एक underlying experiment होगा, ठीक, उस underlying experiment के कुछ sample space होगा, एंड उस पर तुमने अपना दिमाग लगा के कोई रैंडम वेरिएबल बिठाया होगा, है ना? तुमने सोचा कि हम ऐसा रूल लगाएंगे, इस रूल से हम सबको असाइन करेंगे नंबर. अब तुमने ये असाइनमेंट रूल तो लगा दिया, दैट इज इन योर हैंड्स, बट what is the probability of your random variable actually taking a particular value, वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना? वो तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, वो प्रोबेबिलिस्टिक है, वो अनसर्टेन है. अगेन लेट्स जो एग्जांपल पे हम चल रहे थे, सो दिस इज व्हाट यू हैड, राइट? ये दो कॉइन का जो एग्जांपल था, राइट? You said I will define a Bernoulli random variable where I will assign 1 whenever both the faces are matching. I will assign it 0 whenever both the faces are not matching. ठीक है, तुमने कर दिया, तुमने इसको 1 दिया, इसको sorry, this is HH. Okay, so you gave HH1, you gave HT0, you gave TH0, and you gave TT1. That is something that you can do. बट जब ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म होगा, है ना, तुमने दो कॉइन टॉस किए एंड यू ऑब्जर्व के फर्स्ट पे क्या आया है, सेकंड पे क्या आया है. क्या आया है उससे डिपेंड करेगा कि तुम्हारा रैंडम वेरिएबल एक्स क्या नंबर लेगा, बट वो क्या नंबर लेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है. दैट इज अनसर्टेन बिकॉज इट इज स्टेमिंग फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉइन टॉस, राइट? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड टू इट. नाउ जब ये प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी 1 के साथ अटैच होगी, 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर रैंडम वेरिएबल विल टेक अ वैल्यू 1? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम एंड दिस आउटकम, मतलब प्लस करना है, या तो ये होगा या तो ये होगा, which means the probability
that your random variable takes value equal to 1 is 1/4 plus 1/4, which is half. And the probability that your random variable takes a value 0 is again बचा हुआ half, right? ये probability है. अब तुम्हें पता है probability always sums up to मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक ही हो सकती है ना, या 100% या एक, दो प्रोबेबिलिटी तो कोई मतलब नहीं है. इसमें हमने क्या किया, तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास योर रैंडम वेरिएबल इज लाइक अ ऐसा डिश टाइप का है, ठीक, जिसमें तुमने खांचे बना दिए. ये वाला खांचा है 1 का, ये वाला है 0 का. तुम्हारे पास एक टोटल प्रोबेबिलिटी मास है जिसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है 1 पे, है ना. मान लो कि ये कुछ है, 1 किलो सामान है, 1 किलो रेत है तुम्हारे पास, यू हैव 1 kg. Now you want to distribute this 1 kg sand of probability into these two categories because it's a discrete random variable. So दो ही categories हैं और उनको separate कर सकते हैं, है ना. You want to distribute the sand into these two probabilities, into these two categories based on what is their probability. यहाँ पे आधा किलो सैंड आ जाएगा, यहाँ पे आधा किलो आ जाएगा इस केस में, right? This is the intuition of probability distribution. You define another random variable. Suppose तुम्हारा random variable ऐसा है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बर्नौली से काम किया है, so we'll do that. So suppose your random variable is such that heads on both the tosses, ठीक है. So उस केस में you define another random variable, for example y, and heads on both the tosses gets 1, and everything else gets 0 because या तो दोनों tosses पे head होगा या नहीं होगा. अब इसका probability क्या है? This is your random variable y, and what is the probability that y takes a value 1? इन चारों में से एक ही ऑप्शन में सक्सेस माना जाएगा, 1/4. probability that y takes a value 0, 3/4. तो y का सैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? 250 ग्राम, 750 ग्राम, right? That is as simple as that. You have a certain probability that you have to give to this random variable. कैसे बांटोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? जितना प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे. किस चीज की प्रोबेबिलिटी? पर्टिकुलर वैल्यूज देने की प्रोबेबिलिटी. Alright, so suppose again you have a random variable that takes a, suppose die roll है, एक एक्सपेरिमेंट. उस डाइस रोल में तुमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया कि जितना नंबर डाइस पे आएगा मेरा रैंडम वेरिएबल उतना ही नंबर ले लेगा. कर सकते हैं डिफाइन, हाँ. तो हर नंबर का प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1/6 kg sand is going to go into every khancha. Cool. All right. This is your probability distribution. How your probability is distributed across the possible values of a random variable. All right. So this is what we have. The probability distribution or probability mass function, जो discrete के case में उसको we call it probability mass function. So the PMF of a discrete RB is defined for every number x. This is how we write it. ये जो हमने 1 और 0 ऐसे लिखा ना, these are the particular values that your random variable can take. So you denote the random variable by capital letters and you denote the particular value that it can take by the small letter of the same alphabet. So इस केस में x से define करेंगे every number x. Probability that x is equal to x is equal to the probability, ये वो भी लिखने का तरीका है, ठीक है. ये कह रहा है कि all these outcomes in S that actually belong in that category. Okay? So you don't have to, notation बहुत कर लिया, अब इंट्यूशन समझ लेते हैं. नोटेशन भी इतना टफ नहीं है, बट वही है जो मैंने बोला अभी तक, ठीक है ना. ऑलराइट, सो दिस इज योर पीएमएफ. पीएमएफ का डेफिनेशन ये है कि हर
पॉसिबल वैल्यू को वो नंबर दे दो जो उसका प्रोबेबिलिटी है। तो ये 250 ग्राम नहीं है, 0.25, राइट? ओके, ऑल राइट। देन व्हाट इज नेक्स्ट? Yeah, one thing that I want to again talk about is that जैसे मैंने वो खांचे बनाए, right? So this is nothing but that. See, you have this dish of yours, you have these 4 categories, and यहाँ पे तुमने probability कैसे assign की? Probability assign की मतलब जिसको जितना रेत दोगे वो उतना ही भर जाएगा ना, उतना उसका उस कॉलम का उतना फिल हो जाएगा। Your histogram is nothing like that because we already said कि हमने probability का interpretation कैसे किया? Frequentist. If you perform this experiment infinite number of times, there is a 50% chance that both your tosses will turn up the same phase. तो ये histogram क्या था? Frequency distribution. This is probability distribution. So this is the same thing. Okay. Okay, very important. Parameter of a probability distribution. All right. Okay. Now, remember कि again some topic that I have not come across a student who understands this. Probability distribution आ गया हमारा, और हमने क्या कहा कि अभी तक जो हमने HT वाले स्पेस पे डिफाइन किया है, we have defined we considered the case of I think 3 Bernoulli random variables, है ना? क्योंकि हमने 3 तरीके से कहा कि भाई हम इस 4 ऑप्शंस को we can categorize them as success और failure। अपने हिसाब से हम सक्सेस डिफाइन करेंगे और फिर हम बताएंगे कि कौन सा रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन करना चाहते हैं, राइट? नाउ द थिंग इज वी सेड व्हाट, लेट्स लुक हियर, रिमेंबर x जो है, x भी एक बर्नौली ही रैंडम वेरिएबल है क्योंकि उसका भी सिर्फ सक्सेस और फेलियर हो सकता है। ईदर यू विल हैव मैचिंग फेसेस और यू विल नॉट हैव मैचिंग फेसेस। y भी एक रैंडम वेरिएबल है जिसका भी सिर्फ सक्सेस और फेलियर हो सकता है। ईदर यू हैव 2 हेड्स और यू डोंट हैव 2 हेड्स। दोनों बर्नौली हैं, दोनों में फर्क क्या है? दोनों बर्नौली हैं, दोनों को डिफरेंशिएट क्या फीचर करता है, राइट? This is where family of distributions and parameters come into play, right? Okay, so let me get here. Suppose जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, बाद में we will talk about this for every particular distribution that we do. The example that we have been working with is the Bernoulli. So हम ऐसे लिखते हैं that x follows the Bernoulli distribution, right? And choose a better color. Okay, so x follows, here follows का symbol, a Bernoulli distribution oh god, every time. Yeah, x follows a Bernoulli distribution with parameter p, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? p1 कर लो इसको, and we will say that y also follows the Bernoulli distribution. बट हमको पता है कि y और b का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम तो नहीं है। x का ये हाफ हाफ था और y का ये this was x, this is y was 1/4 and 3/4। सो ये सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, वो 1 kg सैंड इन दोनों में सेम तरीके से तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इनमें फर्क क्या है? और rather these two come from, we say that these two random variables come from the same family of distributions with different parameters. और इस केस में the parameter is the probability of success. यही तो डिफरेंशिएट कर रहा है ना। एक केस में हमने सक्सेस ऐसा डिफाइन किया जिसका प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड्स और हेड्स ही चाहिए। एक केस में हमने ऐसे डिफाइन किया कि हेड्स एंड हेड्स एंड टेल्स दोनों सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ हो गई।
इन दोनों में फर्क तो सिर्फ यही है. So parameter is that aspect of a probability distribution that gives its, separate identity in the family in which it belongs. तो तुम सोचो कि तुम्हारा जो भी सरनेम है, suppose my surname is Sahai, right? I belong to the Sahai family, but everyone in Sahai family has some common characteristics, है ना? Genetically हो गया, upbringing से हो गया, या हमारा जो भी wherever we have stayed, whatever values that we have imbibed, there is a certain common feature to all the members in my family. Suppose I take my immediate family only. इसी में जो जो चार लोग हैं उसमें सब में कुछ ना कुछ common है, obviously. That is our Bernoulli family. It is called the family of distributions. Lekin, of course, I am different from my sibling, I'm different from my mom, I'm different from my dad. Mom and dad are different. Everyone has a certain individuality. That is the parameter. दोनों distributions का common feature क्या है? Success या failure. Differentiation क्या है? Success का probability. That depends on whatever, however you have defined it. है ना? So you can have two Bernoulli distributions that you've tried to define differently. तो तुमने ऐसे सोचा कि भाई हम कहेंगे कि अगर heads हो गया या heads and tails, we will say that this is success. And then you defined another random variable where you said that if it is mismatching faces, then it is a success. तुमने define तो अलग तरीके से किया, लेकिन दोनों का parameter तो same है ना? In both the cases, the probability of success is half. So mathematically, they will be treated in the same way. उनका probability distribution exactly एक जैसा ही दिखे. And then, so that gives you what? That gives you a certain sort of individuality also, but that also gives, so it's like finding a soul sister, outside your family. So, जो कहेंगे the brother from another mother. But इसमें mother हमारा family same है. It's just that, just the only thing that we are choosing over here to differentiate between two members of a family of distribution is उनके parameter. इस केस में वो parameter probability of success है. When we will do other distribution तो हमको दिखेगा कि अलग-अलग parameters हो सकते हैं. You may need more things to create your individuality. Sometimes you may need मतलब two things. Sometimes फिर से एक ही चीज चाहिए होगी, but उसका definition थोड़ा अलग होगा. Okay. All right. So this is your parameter. Let's just see what the book has also written. We have that suppose px depends on a quantity that can be assigned any one of a number of possible values, right? Not very intuitive. Okay, so can be assigned any number of different possible values with each different value determining a different probability distribution. Don't bother. Don't bother. This is what it means. All right. Okay, let's go. Then we come to the cumulative distribution function, something that you must have done in school also. इसके ऊपर हम ज़्यादा time नहीं बिताएंगे. Cumulative basically means that you just add whatever happened. मतलब probabilities add करते चलो, है ना? So cumulative में usually you arrange things in a certain order, usually in ascending order, and probability, and the way you write it is, so a PMF, probability mass function, will look like this, that the probability that x is equal to a certain x, right? And cumulative distribution function, it just cumulates. So cumulative distribution function will look like the probability that x is less than or equal to x. All right. So in case में you will have suppose two values, probability that x is equal to 1 and the probability that x is equal to 0 and x is equal to 1. और इस केस में क्या करोगे? The probability that x is equal to, x is less than equal to 0, which is nothing but, since your x in this case Bernoulli में cannot take a value less than 0, so x is less than 0 will essentially be equal to x equal to 0, and the second probability will be x is less than equal to 1, right? So that means that less than equal to 1 मतलब 0 और 1 दोनों included, तो जो भी last value होगी ना उसका probability हमेशा ही 1 होगा, क्योंकि x 0 और 1 ही तो ले सकता है. तो तुम बोल रहे हो कि what is the probability that x takes a value 0 or 1?
इट इज 100%, उन्हीं में से कोई वैल्यू लेने वाला है, राइट? सो आउट ऑफ द CDF इफ यू वांट टू गेट द PMF, तो तुमको सब्ट्रैक्शन वगैरह करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं और ये वैल्यू तुम्हें पता है, सो यू विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। Yes, these things or everything you must have done. I'm not going to spend a lot of time explaining to you the math of how to do things. Intuition is more important right now. So let's see the definition. The cumulative distribution function or CDF, which we denote by capital. So जो probability distribution function होता है उसको small f से denote करते हैं, usually in case of the continuous random variable. But for the cumulative case, दोनों को ही we denote by capital F of a discrete RV with a certain PMF is defined. Fx is equal to the probability that x is less than equal to x. ठीक है? And this is where you sum everything, that sum all the probabilities up to the particular value. तो 0 की कितनी probability थी? Probably 3/4 थी, right? और 0 और 1 की कितनी probability है? 3/4 plus 1/4 which is 1. ठीक है ना? अगर मान लो कि डाई रोल है और तुम्हारे पास 6 possible values हैं, 1 2 3 4 5 6, then the probability of x less than equal to 1 is exactly 1/6. The probability that x is less than equal to 2 is 1/6 plus 1/6, 1/3. ऐसे, ठीक? Right. So CDF, this is like a CDF of discrete will have a step function because there'll be discontinuity. Okay, then what do we have? Then we have expected values. ठीक है? Expected values जैसे हमने पहले भी कहा, जो हम population mean कर रहे थे. Expected values, now for population mean you require the probability of each possibility. कैसे निकालते हो? हर जो तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो सारा तुमने सम कर दिया। अगर तुम्हारे पास सैंपल है तो तुमने हर फ्रीक्वेंसी को यू यूज द फ्रीक्वेंसी एज द वेट, है ना, एंड देन यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज मोर ऑफ अ you can say it's more fundamental, that you are not dependent on what the outcome actually happens. You are using a random variable कि इसकी actually में probability क्या है उसको use करो, but intuition same. All right, so let us look at this. So now we are saying that the definition, let x be a discrete RV with you have certain possible values that it can take, है ना? So जो भी उसका range है, remember domain is the sample space, range is the numbers that it actually takes. So range will always be some real numbers that it takes, and it has a certain PMF, right? Probability distribution है तुम्हारे पास. Then the expected value or mean value of x, mean, which we denote by EX or mu x, जैसा we were doing previously as well, is something like this. So what you do, you take the value that it takes, right? Suppose x value लेगा वो, अभी एक example करके we can just look at it, and the probability with which it will take that value, right? So probability of x, and then you sum it for all the possible values. ये यहाँ पे लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? Suppose die roll से समझते हैं, है ना? Die roll is doing what? Suppose your random variable is कि whether whatever is the number that appears on the die. Question is, what is the expected value of the number that appears on the die? ठीक है ना? वो क्या होगा? या तो 1 हो सकता है, right? या तो 2 हो सकता है, या तो 3, 4, 5 और 6. And what is the probability associated with each? 1/6. Let me use a different color. इसकी probability 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, right? And then what is it asking you to do? Sum.
समेशन, जोड़ दो इसको। What did you get? You got 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 upon 6. मीन है ना ये? मीन में जब हमने वेटेड मीन किया था, हमने क्या कहा था? Weight is equal to the weight that every number gets is equal to the frequency with which that number appears. And probability has this frequentist interpretation. तो तुमने जब ये किया, तुमने हर नंबर को उसकी प्रोबेबिलिटी से वे कर दिया, which is another way of saying the same thing. If they were equally likely, तो तुम उसको 1/6 करोगे, ठीक है? अगर तुम्हारा वैसा केस है जहाँ पे you had that क्या था वो अपना Bernoulli random, right? So the Bernoulli random वाला केस है, this is your x and it can take two values 1 and 0. Probability of 1 is 0.25. Probability of 2 is 0.75. 1/4, 3/4, है ना? जो वाले केस में where you want both of them to be heads. So then what is the expected value? Expected value of x is the summation. So first value is 1. 1 या 0 वैल्यूज लिए जा सकते हैं. 1 हो गया. 1 को तुमने कितना वेट दिया? 1/4 प्लस 0 को कितना वेट दिया? 3/4. 1/4 is your expectation. And what sense does it make? हमने क्या कहा था last time also? When we have a success failure वाला, याद है? When we had a categorical variable. ये क्या है? ये categorical variable है ना? Categorical variable का expectation क्या होता है? It is actually the frequency or the probability with which you expect success to occur. You expect whatever thing that you have assigned a number 1 वो आ जाए, right? क्या probability है उसकी? 1/4 ही तो है. So every time, suppose you do this experiment multiple times, 1/4 of them, like 25% of those all outcomes, you will have heads and heads, which is exactly the, if you take the frequentist approach, if you take the expectation approach, if you take the mean approach, if you take whichever approach, मतलब वो है, ठीक है ना? बट डिफरेंट पे उसका डिफरेंट मतलब है. बेसिकली आइडिया वो है कि उसका मीन क्या है या उसका एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट करते जाओगे और रैंडमली देखोगे तो क्या एक्सपेक्टेशन, वही जिस नंबर का, हर नंबर को तुमने सम करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन निकालना है, बट उसको वे भी तो करना है. और वे किससे करोगे? उसके प्रोबेबिलिटी से. और फिर ये सारी चीजों को सम कर दोगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू. कूल. ओके. So what we have already seen is that the expected value of the Bernoulli random variable is actually equal to the probability of success, P. Okay. Then expected value हो गया. We have certain rules. Expected value of a function. Basically, if you want to do the expected value of a function, you can just replace your x with whatever value the function takes at that value of x. ठीक है? So ये सब चीजें. So if you have, a function h which is defined over your PMF. Suppose PMF ने तुम्हारा value लिया 1/4 and then the function converts it to some other value, right? Sorry, your PMF, your x takes a value 1 और तुमने मान लो कि दूसरा RV define किया which is say 2 times x, right? Or which is x plus 1. So your x is an RV and you define another RV which is x plus 1. So whenever x takes a value, suppose x is 0, so your y will be equal to 1 and x is 1, then your y will be equal to 2. So जब तुम same फंडा इसका probability 1/4, इसका probability 3/4, you will weigh these two outcomes by the same number, you will get the same. मतलब qualitatively वो बिल्कुल same रहेंगे, ठीक है ना? उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता. तुमने 0 और 1 भी तो randomly चूज किया था ना, तो तुम 1 और 2 चूज कर ले, but qualitatively the information in an expected value will be the same. Okay.
Then rules of expectation, a very important rule, something that you apply ऐसे blindly, but ये है that if you take the expected value of a function like this, जो भी तुम्हारा random variable x था, उसके ऊपर तुमने ऐसा function लगाया that your y, where your y is defined as a times x plus b, है ना? So then the expectation is हमेशा constant बाहर आ जाता है, और जो क्या नाम है, मतलब if your constant is attached to a random variable, then the constant will come out of the expectation, right? And if you are taking the expectation of a constant, what do you expect? If it is a constant, it will always be that constant. There is no variability there. कोई randomness है ही नहीं. What do you suppose number 5 है? तुमने बोला what is the expectation of number 5? It is 5 always. Expectation of a constant is a constant. And expectation of a times a random variable is a times the expectation of the random variable. ठीक है? So इसका proof करने का I am not getting into it. Proof is very intuitive. It is basically, suppose your a is equal to 2. So expectation of 2 times x, right, is equal to expectation of x plus x, है ना? And using the linearity of expectation, it is expectation of x plus expectation of x, which is 2 times the expectation of x. And this applies for any constant. Okay, but this is a very important property of expected value. Okay, then variance. वेरियंस, फिर से वेरियंस का फंडा वही है. वेरियंस का मतलब कि मीन जो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके अराउंड कितना स्प्रेड है. बस उसको हमने डिस्कस कर ही लिया है. Let's just look at how the formula looks like. So formula also looks again the same. So you have, this is every deviation, है ना? Sorry, not the summation. ये हर डेविएशन तुमने देखना है x माइनस म्यू, उसको स्क्वायर करना है ना? और उस डेविएशन की क्या प्रोबेबिलिटी है? वेरिएशन कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जितने मीन से दूर दूर सारे वैल्यूज बिखरे होंगे. So if the probability that you will get a value very far away from the mean is high, तो तुम उसको high probability दोगे in your variance measurement, है ना? So you multiply it by the probability of x occurring, जितना दूर दराज का x उसका probability से weigh करोगे, and then again you will sum it usually. So variance का भी same फंडा है, just that now we are replacing the sample mean sort of approach, जहाँ पे हमने सबको sum करके number of observation से divide कर दिया, यहाँ पे हम उसको probability से replace कर रहे हैं, but intuition same ही है. Alright, now let us get to shortcut formula वगैरह. तुम तो you know rules of variance is again something that I don't want to get into. So what you have is that now variance cannot be negative, of course, right? And if you have something like this, if you have a constant attached to the RV, the constant gets squared when it comes out of the variance operator. And what is the variance of a constant? The variance of a constant, of course, is 0. There is no variation. Constant is a constant, fixed. Okay, so now what we will do is, instead of getting started on the binomial, which is the named distribution, we will first of all discuss the continuous and extrapolate some of the properties of our discrete random variables into the continuous क्या नाम है genre, और उसके बाद हम फिर सारे named distributions discuss करेंगे. All right, okay, so this is where we have, okay, so now we have, whenever we deal with continuous random variables, तो जब हम जो probability distribution, probability mass function बोल रहे थे in the discrete case, now we call it probability density functions. क्यों? क्योंकि अब हम एक continuous type की चीज से deal कर रहे हैं. तो अब जो है, जो हमारा ये dish था, in which we had these clear categorizations in case of a discrete random variable, कि हमको इस वाले कॉलम में कितना डालना है, इस वाले कॉलम में कितना डालना है, right? Something like this we had.
Now these distinctions have, you can think of it in two ways. Either the distinctions have vanished, so you have this continuous sort of space, or you can think that ये discretion मतलब ये जो खांचे हैं, ये जो distinctions हैं, these different categories have become so small, right, that it just doesn't make sense to look at each of them individually. है ना, उसका कोई मतलब zero practical value, right? So then you can think कि एक ऐसा पेट्री डिश है ये, और उसमें अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे जाएगा? तुम जब सपोज ये ऊपर से रेत गिराओगे इसके ऊपर 1 किलो सैंड, तो ये इस टाइप से डिजाइंड है कि जहां पे जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिस एरिया की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, वहां पे उस सैंड का पाइल उतना हाई बन जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग समथिंग लाइक दिस, some clear things like this, remember I discussed कि तुम्हारे हिस्टोग्राम स्मूथ भी हो सकते हैं जैसे जैसे तुम उनका क्लास इंटरवल घटाते रहो, ये वही वाला केस है. So instead of getting something like this, you will get something like this, or something smooth. ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट हाँ, कुछ बाउंड्री डिफाइन है. कई बार बाउंड्री जो है पूरी रियल लाइन ही है, बट उससे फर्क नहीं है. जो भी बाउंड्री है उसके अंदर तुम्हें 1 किलो सैंड डालना है, और वो 1 किलो सैंड वहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा जहां जिसकी प्रोबेबिलिटी है. दिस इज हाउ योर प्रोबेबिलिटी हैज डिफरेंट डेंसिटीज अंडर योर सपोर्ट. तो एक टर्मिनोलॉजी दैट I want to introduce, this book also must have it, is the support of a distribution. Something which will be very frequently used. मतलब आगे चल के स्टेटिस्टिक्स में इसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. ये जो सपोर्ट है ना, ये कुछ नहीं है. दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट योर RV can take. Right? So if you have a discrete RV which can take values between 1, 2, 3, 4, 5, 6, then the support of the distribution is 1, 2, 3, 4, 5, 6. The way to remember this is कि कौन से numbers इस sand को support करने वाले हैं, है ना. मान लो कि तुम्हारा एक कंटिन्यूस आरवी है जिसका की रेंज इज फ्रॉम 1 to 2. रियल लाइन पे 1 to 2 वैल्यूज, इट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 2. तो इसका सपोर्ट क्या है? कौन सा रियल लाइन पे वो कौन है जो इसको सपोर्ट करेगा, इस सैंड को? 1 to 2. दैट इज द सपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक सिंपली द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल फंक्शन. ठीक, ओके. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का यही मतलब है कि यू जस्ट moving from a histogram which is not smooth to a histogram that is smooth. Okay, you're moving from PMF to PDF, and this PDF is denoted by this small letter. All right. Then probability distributions for continuous variables. This is the kind of thing that I explained to you. And now instead of summing things, right, we will say that we are, अच्छा, एक चीज जो हमने कही थी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, वी सेड दैट द प्रोबेबिलिटी that a continuous random variable, suppose x is a continuous random variable, takes a particular x value is 0. क्यों हम ये कह रहे हैं? हम ये इसलिए कह रहे हैं, हमने ये कहा कि ऑब्वियसली पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 है, और फिर तुम ये सोचोगे कि अगर हर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी 0 है, the probability that a particular value is 0, and then you sum all the zeros, और किसी मैजिक से ये सारे 0 0 सम करके तुम्हारे पास 1 आ जाता है. दैट इज वेयर द काउंटर इंट्यूटिव पार्ट कम्स इन. लेकिन इसको ऐसे सोचना है, इसका पर्पस ये है कि your value, right, can be, this is where this paradoxical result, जब हम finite और infinite सोचते हैं, तुम जो सोचो, तुम एक फाइनाइट तरीके से सोच रहे हो कि हर चीज का मतलब आई कैन लिस्ट डाउन एवरी पॉसिबल वैल्यू दैट एक्स कैन टेक बिटवीन 1 and 2, एंड देन यू आर सेइंग कि हर पॉसिबल वैल्यू का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो सबको सम करके प्रोबेबिलिटी 1 कैसे हो जाए? बट यू कैन नॉट लिस्ट एवरी पॉसिबल वैल्यू, राइट? एंड द पर्पस इज कि it is not exactly 0, it is, you can think of that it tends to 0. मतलब you are allowing
every number, you are allowing your random variable, if it is a continuous, to take every number between 1 and 2. So it can be 1.0000000000000, I don't know, 1. This is also a possibility. और जब तुम infinite numbers allow करोगे, and you are dividing the probability of 1 by infinity, what do you get? 0. ठीक है ना? तो इसमें इतना ज्यादा दिमाग लगा के कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है. जस्ट द सिंपल फैक्ट दैट देयर आर जस्ट सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि एक पर्टिकुलर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0 समझ जाओगे if that satisfies you, right? So then what we will do is to define a PDF. Instead of working with a particular number, we work with intervals. So the probability, the PDF is defined. Let X be a continuous RV probability distribution or probability density function of X, which is denoted by fx, small fx, such that for any two numbers A and B, this defines the probability that X lies between that number. And then you don't see the summation sign, you see the integrals. क्योंकि हमें continuous उसकी बात कर रहे हैं. So what you do is एक particular function होगा तुम्हारे पास, तुम उस function को integrate करोगे in this interval. Yeah, so this obviously should not ring bells, not ring alarm bells for you if you know at least integration का intuition, which means कि suppose तुम्हारा जो x है, it can take values between these two, and then the PDF will tell you कि कोई भी random interval उठा लो. Suppose ये interval उठाया, तो इसमें इस एरिया जब तुम इंटीग्रेट कर दो तुम्हें क्या मिलता है? एरिया मिलता है. तो इस एरिया का वैल्यू इज द काउंटर पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो 1/4 तुम्हें मिल रहा था डिस्क्रीट के केस में. ठीक है, तुम कोई भी और रैंडम इंटरवल उठा लो, इसका इस एरिया का वैल्यू, इस एरिया का वैल्यू. ऑलराइट, सो देन यू कैन थिंक कि ये जो सैंड है, थिंक ऑफ इट इन 2D. ठीक, सो तुमने 2D में एक ऐसा बनाया, जब तुमने सैंड बिखेर दिया तो तुम 3D से 2D में चले गए, मान लो उसका एक लेवल कर्व में चले गए, और फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसा फिगर आता है, राइट? सपोज ये तुम्हारा उसका बाउंड्री है, एंड यू गेट अ फिगर लाइक दिस, है ना, सम रैंडम फिगर. So then your PDF will exactly be able to tell you कि इस वाले का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, या कोई भी रैंडम का एरिया कितना है. The area is the probability. Okay, and of course the total area is equal to 1. Okay, तो ये एक extension है. It's a theoretical. You have to be a little imaginative when you do it, but it's not that difficult. Okay? It's just an extension. All right. Now, instead of working with just like different numbers, discrete numbers, we work with intervals which have a certain area. Okay. दो कंडीशंस होते हैं, हमको पता ही है कि भाई एरिया हमेशा पॉजिटिव ही इंटीग्रेट होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा. एंड डेफिनेटली जब तुम पूरा नंबर लाइन इंटीग्रेट कर दोगे तो तुम्हारा हमेशा ही 1 आएगा. ठीक, right? This is your continuous. The simplest example of continuous is the uniform distribution, which essentially says that जो भी तुम्हारा इंटरवल है उसमें तुम्हारा सैंड बिल्कुल ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो यू टेक एनी इंटरवल, ये इंटरवल लोगे तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ ही तुम्हें उसका डेंसिटी बता देगा, है ना. तो एनी इंटरवल यू टेक, द प्रोबेबिलिटी इज जस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ दैट इंटरवल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हर if you have any two intervals that are equal in length, उनका probability same. This is your uniform distribution. So you have fx, a और b. अब देखो इसमें parameters क्या है, right? So the parameters are a and b. अभी तक हम ये this is the second named distribution that we have come to. This is the uniform distribution. Uniform से हमको कोई confusion नहीं है. Probability is uniformly distributed. अब इसका पैरामीटर क्या है? You can have multiple, you can have many, you'll have a family of uniform distributions. सारे के सारे distributions में equal distribution होगा. What will differentiate one uniform from the other? A or B.
स्टार्ट और एंड पॉइंट, और रादर द डिस्टेंस, जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना, ये तुम्हारा अगर मान लो कि इंटरवल बड़ा कर दोगे तो ये सेम 1 किलो सैंड की लेयर तो पतली हो जाएगी ना, एक यूनिफॉर्म को दूसरे दूसरे यूनिफॉर्म से यही चीज डिफरेंशिएट करती है. सो वी से दैट सपोज u is the random variable, it follows the uniform distribution with parameter a comma b, which are the boundary points. All right, this is your uniform. Okay, now yeah, so now you have your CDFs. CDF का same intuition है. एनीवेज इसमें हम सिंगल नंबर तो डिफाइन करते नहीं है कंटिन्यूअस में, तो हम पूरा का पूरा वो डिफाइन करेंगे कि एक नंबर से लेस देन, सो प्रोबेबिलिटी दैट योर x इज लेस देन इक्वल टू अ सर्टेन नंबर, राइट. सो दिस इज योर f of 8, मतलब what is the probability that the random variable x takes a value less than equal to 8. Similarly, what is the probability that the random variable takes a value less than equal to 10? अगर रैंडम वेरिएबल 10 तक ही वैल्यू ले सकता है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, जस्ट लाइक द कंटिन्यूअस डिस्क्रीट केस. ठीक है ना. एंड इंस्टेड ऑफ समिंग इट अप यू विल इंटीग्रेट. Cool. All right. Then we have the using fx to compute probabilities. That's fine. Percentiles also can be defined like that. And मीडियन एक्सपेक्टेड वैल्यूज. ठीक है ना. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फर्क सिर्फ ये है कि हम डिस्क्रीट में सम करते हैं, इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक द वैल्यू x, यू वांट टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, बट क्या है वहां पे इंडिविजुअली तो वैल्यू 0 ही है, बट व्हाट यू डू इज यू कैन थिंक कि सपोज ऐसा रैंडम वेरिएबल है, राइट. देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हर पर्टिकुलर वैल्यू यू विल असाइन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वैल्यू. ऑफ कोर्स इट इज 0, बट जो भी वो फंक्शन है वो तुम्हें उसकी प्रोबेबिलिटी देगा, और वो क्या है, वो तुम्हारा पीडीएफ है, राइट. सो देन यू कैन थिंक कि ये है ना, दिस इज, यू कैन नॉट थिंक, दिस इज द फैक्ट, ये है एफ एक्स, y is equal to fx का ग्राफ है ये, right. And the area under it, the area under this graph is basically the probability, है ना. तो इस वाले इंटीग्रेट करोगे, मान लो कि तुम्हें ये पूरा एरिया इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, हर वैल्यू का जो भी फंक्शन का वैल्यू है, for every x what is the value that the function takes, right. And then you integrate it dx. ये सारा कुछ इंटीग्रेशन से इंट्यूशन क्लियर होना चाहिए. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट ओनली summing up x, but with every x you are attaching the density of that x. We are not using the term probability क्योंकि by definition the probability goes to 0, but you can say that वहां पे density कितनी है, कितनी डेंसिटी है, या कितना वहां पे सैंड गिरने का, सैंड को होल्ड करने का कितना कैपेसिटी है, right. So you have your x, you have something that is analogous to probability in the discrete case, you know, and then you integrate the entire area, which is again giving you the same thing, number times the probability, the hold of that number. This is your expected value, and this is again the same restatement कि अगर function है तो function x को h of x से replace कर दोगे. एंड दिस इज द वेरियंस. वेरियंस में भी हमने सेम काम किया है. वेरियंस में भी क्या किया है, फिर से दिस इज द डेविएशन, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, और हर डेविएशन को कितना वेट मिलना चाहिए, उस डेविएशन के होने का प्रोबेबिलिटी, वो है तुम्हारा एफ एक्स, एंड देन यू इंटीग्रेट. ऑलराइट, then I think we come to the named distributions. Okay, cool. So now we will get to the named distribution. So we have discussed all the sort of basic properties of distribution. अब हम कुछ particular distributions discuss करेंगे.
जिसका मतलब दे आर सो फंडामेंटल एंड दे आर सो नाइस दैट दे गेट देयर स्पेशल नेम्स. ठीक, सो लेट्स डू दैट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट. हमने दो कवर किए, बर्नौली और यूनिफॉर्म इन द केस ऑफ कंटिन्यूस. ठीक है, अब अगेन द पर्पज इज टू गेट द इंट्यूशन क्लियर टू यू. जो भी इसका मैथ है तुमने अपने एग्जाम में किया ही किया होगा, लेकिन मैथ करने के बाद हम उसका मतलब ही भूल जाते हैं, है ना. तो हम उसको पहले क्लियर करते हैं. तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड अ बर्नौली. मतलब बर्नौली कैसा रैंडम वेरिएबल है. जैसे हमने कहा कि बाइनोमियल कैसा रैंडम वेरिएबल. हमने कहा बर्नौली क्या है. बर्नौली वहां वो रैंडम वेरिएबल जिसको हमने कहा कि तुम जाओ एंड यू जस्ट डिवाइड द सैंपल स्पेस इनटू सक्सेस एंड फेलियर. राइट, एनी रैंडम वेरिएबल दैट आई डिफाइन लाइक दिस, जहां पे मैंने कुछ आउटकम्स को सैंपल स्पेस में आई असाइंड कि तुम सक्सेस हो तुम फेलियर हो. ठीक, ऐसा अगर होगा तो जो मेरा रैंडम वेरिएबल है उसका वो जो उसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, उसको हम कहते हैं बर्नौली. रिमेंबर, ये बर्नौली नाम वगैरह हमने दिए हैं. बर्नौली वाज द पर्सन. ठीक, so these are the names that we have given, but what you will realize is that in certain specific cases it will become more clearer जब हम ऐसा binomial करते हैं कि these are things that are, you can say, found. These are statistical regularities that we have discovered. This is something that existed. It is not an invention, it is a discovery. We have discovered कि ये statistical regularities हैं. हाँ, और उसको हमने नाम दे दिया है, वो अलग बात है. Right, so like the discovery of India discovers India, doesn't invent India. We've just named it whatever country we liked to name. Similarly, these are not inventions. These are not कि तुमने ये डिफाइन हमने बनाया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. नहीं, तुमने एक आरवी डिफाइन किया है एंड देन यू ऑब्जर्व कि ये इस टाइप से डिफाइंड सारे आरवीज का एक पर्टिकुलर फंक्शनल फॉर्म आया था. यू डिस्कवर्ड दैट. ओके, ओके. सो देन बाइनोमियल क्या है. बाइनोमियल का मतलब ये जो ऊपर स्टोरी दिया हुआ है यही स्टोरी है, बट उसको ऐसे समझते हैं कि बाइनोमियल क्या है. You know the Bernoulli and you know Bernoulli trials, है ना. Now suppose you do multiple Bernoulli trials, right? You have an independent Bernoulli trials, which means के जब एक Bernoulli trial हो गया, हाँ, जो भी एक्सपेरिमेंट था वो तुमने किया, उसके बाद जो नेक्स्ट किया that is independent of whatever happened before, which means के जो probability of success था वो सेम रहेगा. मान लो कि कॉइन टॉस है तुम्हारा बर्नौली ट्रायल, तो तुमने एक कॉइन टॉस किया, उसका प्रोबेबिलिटी, अगर सेम कॉइन टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाउएवर यू हैव डिफाइंड इट, सपोज योर सक्सेस इज हेड्स. So then if you keep on tossing, these are independent trials, independent of each other, because the probability of success does not change with every trial. If you do not change the meaning of success, if you do not change the coin, then P remains the same. ठीक, सो अगर तुम एक बर्नौली ट्रायल को n टाइम्स करते हो एंड यू काउंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दैट ट्रायल, योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, सपोज हेड सक्सेस, if you count the number of successes in that ट्रायल और उसको तुम एक रैंडम वेरिएबल बोल दो, हाँ, सो यू हैड योर कॉइन टॉसेस, या फिर तुम दो कॉइन टॉस ले लो, जो भी मर्जी है, बट लेट्स वर्क विद द सिंपलेस्ट एग्जांपल. सपोज द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज a coin toss. So what you did was you tossed the coins, suppose 10 times. So you got a certain string. Blah blah blah. अब तुमने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज y. You defined one second. Yeah, you defined a random variable, let's say y, which is the number of success. सक्सेस का डेफिनेशन कमिंग फ्रॉम बर्नौली. तो इस केस में सक्सेस तुम्हारा h था, मतलब दिस इज काउंटिंग द नंबर ऑफ हेड्स इन दिस केस. n ट्रायल्स में 10 ट्रायल्स में कितने हेड्स आएंगे, है ना. इसका कितना नंबर हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक.
How many heads can you get? You can get 0 heads. You can get 1, 2, 3, 4, maximum 10 heads. एक रेंज मिल गया. ये वेरिएबल क्या करेगा? हर आउटकम को, राइट, ये तब क्या होगा ना, जब ये तुम 10 ट्रायल्स करोगे, 10 बर्नौली ट्रायल्स विल बिकम 1 बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. गेट इट? 10 और सम नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स मिलके एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बनता है. ऑलराइट, सो दिस यू डू इट 10 टाइम्स, दैट इज 1 एक्सपेरिमेंट. इस 10 टाइम्स में सपोज तुम्हारा y ने वैल्यू लिया 5, फिर तुमने किया 10 बारी टॉस, फिर तुम्हारा y ने कुछ वैल्यू लिया सपोज 3, फिर किया, फिर उसने कुछ वैल्यू लिया सपोज 8. ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं ना y. And then the experiment that you have to repeat is not 1 coin toss but 10 coin tosses. And then every coin toss with every full Bernoulli experiment, every full binomial experiment, your binomial RV will take a number between 0 to 10. Right? This RV, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. यू विल रियलाइज कि ये जो बाइनोमियल है, सपोज ये जो y है, देन वी से दैट y follows the binomial distribution with parameters. पैरामीटर क्या है? ऑफ कोर्स कितनी बार तुमने एक्सपेरिमेंट करना है, और हर एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ना. अगर तुम इसी चीज को 12 बार करो एंड तुम सक्सेस का और तुम एक क्या नाम है बायस्ड कॉइन ले लो जिसमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इज ओनली से 1/3, फिर भी वो बाइनोमियल ही होगा. इफ यू डिफाइन अनदर वेरिएबल सपोज z, where you are tossing a coin, the number of Bernoulli trials is 12 and the probability of success is 1/3, again will be a binomial random variable, but उसको हमारे x से हमारे y से how will it be different? Because of the number of times, number of Bernoulli trials that you have and the probability of success in each Bernoulli trial. So you can have another Bernoulli trial, another binomial variable, suppose k, same number of trials 10 ही, लेकिन तुमने probability of success बदल दिया, हाफ की जगह 1/3 कर दिया. This is also, k is not the same as x in this case. ये सब अलग है. पैरामीटर में कोई एक भी, सपोज दोनों का, दो भाई हैं, दोनों के नाम में कुमार है, अक्षय कुमार समथिंग एंड विजय कुमार समथिंग. कुमार सेम है, एन सेम है, बट दो लोग हैं ना, different distributions. So this is an example where you have two parameters, two differentiating characteristics, and one member of the family can be different from the other just based on just one parameter. All right? Okay. So this is your binomial का story. इसका जो distribution आता है, it takes a particular functional form, which is basically coming from your permutation and combination वाला probability. ठीक है? So I will not get into a lot of detail about that. So again, this is saying number of successes among n trials. n trials में कितना सक्सेस तुम्हें मिलेगा, और ऑफ कोर्स सपोज ऐसा है तो इसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आएगा. सिंस इन दिस केस द पर्टिकुलर ऑर्डर डज नॉट मैटर, सो इट विल बी एन NC x sort of case. ठीक है ना. And then you will multiply it with probability of, if you want k successes, so your probability of success will be multiplied by, will be raised to the power k, and the probability of failure will be raised to the power n minus k. All right. This is your binomial. ठीक. Then mean और variance जो है वो binomial का ऐसा होता है. Mean is NP, right, and variance is NPQ. इसका जो proof है, you can do it, but the idea is that you can think that Bernoulli जो binomial है वो, this is nothing but a function of various Bernoulli trials, or expectation of a binomial. Suppose y is a binomial,
is nothing but the expectation of n Bernoullis, है ना, जो भी है। तो कुछ नहीं, ये n times the expectation of a Bernoulli होगा, which is n times p. ठीक है, so all right. Now the next one is actually we have a set of three sort of things which are sort of variations of the binomial. तो binomial और hypergeometric में क्या फर्क है? बाइनोमियल क्या कह रहा है कि हमारे पास जो बर्नौली ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वंस यू हैव डन द फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, राइट, फर्स्ट बर्नौली ट्रायल, नेक्स्ट का उससे कोई तारतम्य नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज नहीं होता है। हाइपरजोमेट्रिक में क्या है दैट द सक्सेसिव बर्नौली ट्रायल्स आर एक्चुअली डिपेंडेंट। तो पिछली बार क्या हुआ उससे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट में क्या हो, और फिर तुम नंबर ऑफ सक्सेस ही काउंट कर रहे हो। सो दीज आर रिलेटेड। व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज दैट अगर तुम कॉइन टॉस का सोचते हो, राइट, सो कॉइन टॉस इज बेसिकली सेइंग के ऑब्वियसली कॉइन टॉस में यू कैन नॉट चेंज दी, unless you change the coin you don't change the probability of success. But suppose एक तुम्हारे पास you have a jar जिसमें के different different balls हैं और वो you cannot see the color of the ball, there are two colored balls, white black color के balls हैं। अब इसमें अगर तो तुम एक बॉल उठाते हो, है ना, और you look at it, suppose there are 20 balls, right, जिसमें के 15 white है 5 black है। If you pick out a ball, the probability of you getting a white ball is 15 by 20. ठीक? If you keep the ball back and then pick out a ball, which is called sampling by replacement, sampling with replacement, तो probability does not change. This is a Bernoulli trial which is independent Bernoulli trials. But अगर तुम वो बॉल उठा के साइड में रख दो, व्हाइट आया साइड में रख दो, दोबारा जब उसमें हाथ डालोगे तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई ना। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 14 by 19 probability of getting a white ball, right? So if you have Bernoulli trials that are dependent, and then when you are trying to count the number of success, suppose इस case में you have defined the success to be a white ball, तब you have a hypergeometric distribution. You can define सक्सेस है, मान लो कि ब्लैक बॉल तुम्हारा सक्सेस है तो भी चेंज होगा। अगर फर्स्ट टाइम तुम्हारा जो तुमने निकाला इज अ वाइट बॉल, राइट, देन द सेकेंड टाइम you don't replace it, you sample without replacement. The second time you put hand in the whatever jar that you have, number of black balls तो 5 ही रह गए, बट उनको पिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स ही कम हो गए। So earlier it was 5 by 20, now it is 5 by 19. Changing probability of success. And then when you count the number of success, you have your hypergeometric. Cool. This is your hypergeometric. Then you have yeah, all right. So this is where you have dependent trials. Then you have your geometric. Geometric चार जो है ना ये एकदम related है. Then you have your negative binomial and your geometric. तो एक केस में you have Bernoulli trials that are independent, you're counting the number of success. दूसरे केस में hypergeometric, you have Bernoulli trials that are dependent and you're counting the number of success. Then you have geometric, which says that ये दोनों मैं साथ में बता देती हूँ। Geometric ये है, again you have n Bernoulli trials which are again independent, but now you are counting the number of successes, right? Success probability भी same है, but now you're counting the number of successes, number of failures till you get the first success. So ये जो negative binomial और geometric हैं, ये count करते हैं number of failures. Alright, so this is what you can remember. Binomial and hypergeometric, इनके नाम का reason है because of the kind of distributions that they follow. So binomial में binomial series लगता है, geometric में geometric series लगता है, but keeping that aside, जो तुम्हारा binomial और geometric है, तो binomial और geometric are counting the number of successes, but they differ whether your Bernoulli trials are dependent or independent. और जो तुम्हारे ज्योमेट्रिक और नेगेटिव बाइनोमियल है, दे आर काउंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स. तो ज्योमेट्रिक डज व्हाट? ज्योमेट्रिक इज काउंटिंग द नंबर ऑफ फेलियर्स
till the first success occurs, है ना. So मान लो कि ये जो अगेन जो ये कॉइन टॉस वाला एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन 10 टाइम्स, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करोगे, सपोज तुम्हारा फर्स्ट हेड आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, पहले ही हेड आ गया, हेड वाज योर सक्सेस. सो देन इन दिस केस जो तुम्हारा ज्योमेट्रिक वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल, दैट विल टेक अ वैल्यू 0. सपोज सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट रन किया और हेड्स आने में 3 ट्रायल्स लग गए, 3 फेलियर्स, चौथा टॉस वाज द हेड, right? Then the random variable takes a value of 3. So you're counting the number of failures till you get a success, not counting the success. ठीक है ना, ये हो गया योर ज्योमेट्रिक. और नेगेटिव बायनोमियल क्या है? नेगेटिव बायनोमियल इज यू आर नॉट काउंटिंग द फर्स्ट सक्सेस, यू आर काउंटिंग सपोज rth सक्सेस. तो इसमें तुम्हारा एक और पैरामीटर ऐड हो गया. Suppose you want to count के how many times I will fail before I get 3 successes, 3 hits. तो एक जब हेड आएगा तब फिर चलते रहोगे, फिर कुछ फेलियर आएगा, फिर कुछ टेल्स आएगा. जैसे थर्ड हेड आएगा अब तुम सारा फेलियर काउंट करोगे. अगर तुमने एक रैंडम वेरिएबल ऐसे डिफाइन किया है, देन यू हैव योर नेगेटिव बाइनोमियल, राइट. सो दीज आर द 4 discrete distributions that are essentially based on Bernoulli trials, depending upon के तुम क्या count कर रहे हो, whether or not trials are independent, right? And how many success and failures are you counting? All right. Okay. Then last one I guess is your Poisson. Poisson काफी बार बच्चों को बहुत confuse करता है. I was one of those kids. I never understood कि क्या Poisson का मतलब है, और उसके examples भी ऐसे अतरंगी होते थे. But you can think of Poisson as an approximation of the binomial. So Poisson क्या कह रहा है कि जो भी ये notation में बाद में जाते हैं, Poisson is saying that suppose you have x that follows the binomial, n Bernoulli trials, p probability of success. अब अगर तुम इस सिनेरियो को ऐसा कर दो that you increase the number of trials, है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स कर दो. तुम ये 10 कॉइन टॉस नहीं कहो, तुम कहो कि मान लो कि 10,000 कॉइन टॉस, है ना. ये इंक्रीज टू इंफिनिटी, मतलब यू कैन ऑल्सो गो टू 1 lakh 2 lakhs, वेरी 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 लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एवरी ट्रायल टेंड्स टू 0. मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी, जिस भी तरीके से तुम सक्सेस डिफाइन करो, एवरी ट्रायल में उसका प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा. सो देन दिस इज द काइंड ऑफ आरवी दैट इज यूज्ड टू मॉडल सिचुएशंस लाइक कि एक साल में कितने अर्थक्वेक आएंगे, है ना. तो तुम ऐसे सोचो कि एक साल में अर्थक्वेक आता है मान लो के 10 सेकंड के लिए, हाँ, मान लो के 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड्स के लिए. सो देन इन अ ईयर हाउ मेनी 30 सेकंड्स डू यू हैव? अ वेरी लार्ज नंबर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है ना अर्थक्वेक की, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि किसी एक 30 सेकंड में अर्थक्वेक आएगा? वेरी स्मॉल. हाँ, सो मान लो कि इंडिया में, यार सुनो, तुम दिल्ली की बात करो कि दिल्ली में एक साल में अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इफ यू हैव अ रैंडम वेरिएबल दैट इज काउंटिंग द नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स in Delhi in a year, this is the kind of distribution that your Poisson will take care of, right? So if your n tends to infinity and your p tends to 0, such that इनका जो product है that is remains a constant, then x का जो distribution होगा उसको Poisson distribution बोलते हैं, and the parameter is lambda, and this lambda is nothing but np. और lambda पता है क्या होता है? np is nothing but the rate of success per unit of whatever thing you're looking at. So rate of success मतलब number of earthquakes per 30 second, right? Number of earthquakes, whatever is your unit of time that you are measuring. Okay, so this is your Poisson. Poisson is essentially an approximation of the binomial, जहाँ पे तुमने number of trials को बहुत बड़ा कर दिया और हर एक ट्रायल में, हर एक बर्नौली ट्रायल में अपना probability of success को बहुत छोटा कर दिया. Now technically you can also solve, you can also present this Poisson
using a binomial distribution. लेकिन वो इतना मतलब it will be very difficult to handle because the numbers will be huge, right? You have those that permutation that combination वाला expression, right? You remember how many factorials it has. वो करने जाओगे तो वो बिल्कुल ही untractable बन जाएगा. This is an approximation of that. Okay, all right. So this is your Poisson. ये उसका expression होता है and your parameter is lambda. इस case में I guess the parameter they've taken is mu, but you can take mu या lambda जो भी. I'll just write mu so that since this is the book that you are referring to. All right. Now, finally, let us get to the continuous distributions, and there we will discuss the normal distribution. Okay. So, since we have already done close to an hour and a half, what I will do is I will stop here and we will continue the discussion of the normal distribution in the next revision lecture. The reason is that normal एक बहुत ही special distribution है जिसको हमने निपटाना नहीं है, जिसको हमने समझना है, and all your econometric statistics later जब तुम samples और बड़े samples के साथ deal करते हो, normal becomes your, have to know, you have to understand normal, you have to understand कि normal distribution कितना normal है, उसका नाम ऐसे ही normal नहीं पड़ा है. It's called normal because it is normal. Thinking of it, कुछ ऐसी चीज जो normalcy को define कर रही है, वो है ये distribution. So इसको हमको इसको we have to इतनी इज्जत देनी है इसको. So I'll just continue this part in the next lecture, and then we will continue. We will be done with your stats of the first year. We will begin with your stats of the second year. All right. Cool. So I hope this was useful. And my focus was to only get things intuitively clear to you because the course that we are doing now, that will not require you to know exact functional forms of a particular named distribution. जिसकी जरूरत है normal की वो मैं करवा दूंगी. But my purpose was to actually make it clear to you कि एक distribution क्या होता है और एक parameter क्या होता है. ये जो parameter और distribution की बातें हैं, especially parameter की बातें, this will come in handy in all the economics that you will do. In fact, कभी भी you have two sorts of functions that look the same, they differ on parameters. ये जब तभी बात करेंगे जब हम exogenous variable की बात करेंगे, जब हम चीजों को endogenous और exogenous में differentiate करने की बात करेंगे. All right. Okay, so I'll stop here. I will see you in the next session where we take the revision forward, and this will be the pace before we actually begin getting into the actual syllabus of quantitative methods. All right, so see you in the next class. Bye.